होता है, आप चाहते हो कि ये करो ना तो हेड्स दे देना, ये करो तो टेल्स दे दो, बस सब घुमा दिया, जो आ गया डिसीजन फिर वही डिसीजन. हाँ, that's a difficult one. I always say either you be so famous कि आप कहीं भी जाओ तो लोग आपको ऐसे ही जाने, आपको पहचाने आप क्या करते हो, and अगर वो नहीं है तो I think you need to still work hard, more harder. Hello Kinshuk, thank you for joining us. It's always my pleasure. How are you? I'm good. Great. Tell me, how are you? I'm great. Great. Great to have you. We're really excited. We can't start this conversation or the interview without going back to your childhood. Right. So the most famous child and the most famous show you had. And you had something that nobody had, the pencil. So how was it back then? I in fact still have the pencil and people keep asking me for it. In fact, जब COVID भी हुआ था तब बहुत सारे memes circulate हो रहे थे all over the social media कि where is Sanju, ask him to make the vaccine for COVID and all. So yeah, and also I think it's COVID was a learning experience for everyone, though for some it was a very sad, difficult one, but yeah, it was a learning experience. Nice. So what was that turning point in your life कि मतलब आपने decide कर लिया कि भाई अब तो मुझे acting ही करनी है? So very frankly, I think Shakalaka Boom Boom, Raju Chacha, Vishnu Puran, I think these three projects happened just back to back. Right. I think Vishnu Puran was in 99, Raju Chacha was in 2000, 99 and 2000, and Shakalaka was in 2002, 1 or 2. So ये तीन projects के बाद I think was the point where I decided that acting till then was a hobby for me. जैसे हम खेलते हैं स्कूल के बाद खेलने चले गए, क्रिकेट सीखने चले गए, वैसे ही था मेरे लिए. बट आई थिंक इन तीन प्रोजेक्ट्स के बाद मैंने अपने लाइफ में डिसाइड कर लिया था कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो इसी फील्ड में करना है, वेदर इट इज डायरेक्शन, वेदर इट इज एक्टिंग और वॉट एवर. सो दीज थ्री प्रोजेक्ट्स, और प्रॉब्ली यू कैन से दैट 99 to 2002 वाला जो फेज वाज द क्रॉसरोड वेयर आई मेड माय डिसीजन दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. सो जैसे मोस्ट ऑफ सबको इंडस्ट्री का ग्लैमर दिखता है, बट नोबडी नोज द बिहाइंड द सीन अबाउट इट, द हार्ड वर्क दैट गोज. सो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो? So Shakalaka was in 2003, I think 2 या 2003 में था जब start हुआ था. So 10 years before Shakalaka Boom Boom I started acting. Okay. Yeah, so जो आप बोल रहे हो स्ट्रगल और जर्नी होती है हर एक इंसान की. सो आई स्टार्टेड एक्टिंग व्हेन आई वाज 4 years old. आई स्टार्टेड विद अ मराठी फिल्म. तो तब तो किसी को क्या ही पता होता है एक्टिंग क्या होता है, वो तो बस आप नेचुरली आप चीजें करते जाते हो. And yes, it took me 10 years to do Shakalaka Boom Boom. Even though मैंने Shakalaka से पहले एक feature film की थी Raju Chacha, but the fame that Shakalaka Boom Boom gave me was, I think, मैं आज भी उसको कोई scale नहीं है जिस पे I can measure it or something like that. I always say either you be so famous कि आप कहीं भी जाओ तो लोग आपको ऐसे ही जाने, आपको पहचाने आप क्या करते हो, and अगर वो नहीं है तो I think you need to still work hard, more harder. So, but I think Shakalaka was that point in my life. उस टाइम पे मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ तो सब हर कोई पहचानता था. And after Shakalaka Boom Boom also जब हमने खत्म किया, I thought कि probably people will forget Sanju, and I took a little break. I completed my graduation, and मैंने सोचा था कि I'll do a fresh start from zero. But I think later on I realized people are not gonna forget Shakalaka Boom Boom. So तो मैं तो जिस चीज को सोच रहा था कि लोग भूल जाए. इनफैक्ट आज वही मुझे एक एडेड बेनिफिट जैसे सपोर्ट करता है, वो चीज करता है. एंड आई स्टिल बेसिकली आई डिड स्टार्ट अगेन फ्रॉम अ जीरो ओनली, बट आई जस्ट हैड अ लॉट मोर ऑफ एक्सपीरियंस देन कंपेयर टू समवन एल्स हु वाज स्टार्टिंग अगेन. So what are your aspirations? Like where will we see you next? Like Bollywood, Hollywood, or something else? Are you completely I want to do everything. I don't know whether it is being greedy or right or wrong. I don't know, but sadly there is this thing in our society or in the industry, where we start stereotyping actors also, कि हाँ ये तो television का actor है, हाँ ये तो Bollywood का actor है. अब तो और भी platforms आ गए कि अरे नहीं ये तो OTT वाला actor है. But I just want to be an actor who does a lot of good work, who inspires people, whether it is Bollywood, whether it is television, whether it is OTT. It does not matter to me much, because I just want to do good work that people enjoy watching. So जैसे आपने start किया from a child artist to now, so ऐसा
क्या आप गाइडेंस जो अभी फिलहाल जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पीपल आर ट्राइंग टू गेट इनटू एक्टिंग, इनटू टेलीविजन, तो ऐसा कुछ गाइडेंस या टिप आपके पास हो जो आप शेयर कर सकते हो? गाइडेंस तो इनफैक्ट मैं खुद ही अभी एक मेरी जर्नी चल ही रही है अभी भी, मतलब लाइक इवन दो आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 4 एंड लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन आई टेल देम कि हाँ 4 साल था, मतलब अभी आई थिंक 25-26 years हो गया आई हैव बीन एक्टिंग, सो पीपल लाइक ओह 26, फॉर मी इट्स लाइक इट्स जस्ट 26 नाउ, लाइक इट्स मच मोर लॉन्गर जर्नी अहेड. But what I would like to suggest, or what I usually do, is it's okay to not have plans. Even if you have plans, if things don't turn out as per your plans, it's all right. Like just go with the flow. Just keep on giving your best. Keep on working hard. Keep on working smart along with working hard. And just surrender to the universe. I think it will work out for you. So. जैसे अभी हम आपके चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ जो आपने बचपन से फॉलो किया, समथिंग लाइक अ फ्रेज और अ वर्ड दैट ड्राइव्स यू, जो आप फॉलो करते हो, यू बिलीव इन दैट? इनफैक्ट रिसेंटली आई वाज डिस्कसिंग विद वन ऑफ माय फ्रेंड, लाइक उनको समझ में नहीं आता क्या डिसाइड करना है, समथिंग लाइक दैट. सो आई डू दिस, आई डोंट नो इफ इट वर्क्स फॉर एवरीवन और नो, बट मैं जस्ट कॉइन टॉस करता हूँ. Yeah, so I have taken big decisions in my life, like जहाँ पे लोग सोचते कि दिमाग से सोचना चाहिए, और मैंने कॉइन से सोच के किया है. And I just tell कि because basically I ask the universe to take a decision for me, and I just tell them कि आपको जो लगता है, because of course the universe तो ऐसे physical form में है नहीं, it can't communicate to you. So I have since childhood I've made coin the medium where it communicates to me. ये बताओ आप चाहते हो कि ये करो ना तो हेड्स दे देना, ये करो तो टेल्स दे दो, बस सब घुमा दिया, जो आ गया डिसीजन फिर वही डिसीजन. वेदर फिर वो ऐसा भी हो कि शायद मेरे को दिल से लग रहा था कि ये नहीं करना चाहिए, बट अब ये डिसीजन है, फिर मैं वो चीज दिल से कर लेता हूँ, एंड प्रोबब्ली इट हैज वर्कड आउट गुड फॉर मी. सो वाज शाकालाका बूम द सेम, यू डिसाइडेड कि मैं नहीं शाकालाका बूम जस्ट हैपेंड, एंड तभी तो मुझे इसका इंटेंसिटी नहीं पता थी, बट जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर थे, apparently even before the show went on air he had to leave the production house because of his some personal things. But there was this one thing, I think initial days of shoot only, तो उन्होंने आके मेरे को लास्ट डे उनका जो था सेट पे आए थे, उन्होंने बड़े दिल से मुझे बोला था कि यह ना मेरे बच्चे जैसा प्रोजेक्ट है, तो तुम बस दिल लगा के काम करना. तभी मुझे उसकी इंटेंसिटी, उस बात की इंटेंसिटी पता नहीं थी, क्योंकि मैं खुद 12 साल का था, तो 12 साल की उम्र में आप कोई ऐसे कह रहा हाँ अंकल मैं करूंगा, मन से करूंगा काम, बस इतना बोल दिया था. But today when I I make things, I make short films or those things, so when you put your heart and soul into something, so now I understand when he came up to me and he said कि ये मेरे बच्चे जैसा प्रोजेक्ट है, उसको ये करना. So I felt कि उन्होंने कैसे probably a father of a daughter जो अपनी बेटी को ये करते हैं ना, hand over करते हैं. I think it was that moment that we had, and probably because of my innocence I didn't understand the intensity of it, but today now I understand, and I thank him a lot for because he was the one who chose me to play Sanju. So I think I'm sure I believed in you. So if not an actor, what would you be? Like a 9 to 5 job करोगे या? नहीं ये तो मतलब मैंने डिंडोरा पीट चुका हूँ, मैं फाइटर पायलट बनता मैं. I wanted to join Air Force very badly. But मुझे चश्मा आ गया था, so because that time Indian Air Force didn't take people with corrected vision also. Now they apparently now they have decided to take people with corrected vision also. But मुझे कुछ टाइम के लिए चश्मा आ गया था, but I would have been a fighter pilot. So what do you believe in? Fake it or make it? Yeah, of course you should make it, and if you are not making it then fake it till you make it. हमारे एक बहुत ही अच्छे सर थे, इन्होंने ये बात कही थी, fake it till you make it. Okay, most people follow that. Yeah, it works. Like if you believe, as I said ना, मैंने वो coin वाली बात की कि अगर मैं नहीं भी चाहता हूँ, but अगर मैं दिल से वो चीज करूँ ना, it will happen. You will make it. Right. So, do you believe in luck or hard work? Both. Luck also plays a very important role in your life. I also believe a lot of astrology and ये सब चीजें also, because it's very scientific. हम चीजें समझ नहीं पाते because it is very deep. You need to give a lot of time to understand things also. हाँ, but right astrology भी जरूरी है, but हाँ luck और ये सब चीजें भी काफी ये करते हैं. नहीं तो बहुत सारे लोग जो हार्ड वर्क करते रह जाते हैं, but things don't turn out.
बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार्ड वर्क करना छोड़ो. ऑल्सो आई सेड वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट ऑल्सो विद इट. इट्स इम्पोर्टेंट. So what would you choose? Win a race or win a debate? और विन अ रेस. Winner. या बिकॉज ठीक है, डिबेट तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं एंड आई डोंट इंटेंड टू चेंज एनीवन्स पर्सपेक्टिव. लाइक यू नो, इट्स योर ओपिनियन. आई एम ओके, आई हैव माई ओपिनियंस. इफ दे डोंट मैच, इट्स ओके. वी टू आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स. मुझे अपने आप को सही प्रूव करने की जरूरत नहीं. अगर मुझे पता है मैं सही हूँ तो मैं अपने लिए सही हूँ ना. किसी और की सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी है मुझे कि मैं सही हूँ. That's nice. So rich and sad or poor and happy? That's a difficult one. आज के डेट में I would want to be rich, but I think I'll be happy also. Rich and happy. Yeah, rich and happy. Nice. So what do you feel about COVID that's happening right now? Is it a blessing or a curse? Or like your perspective? My perspective about COVID, I think I'll just share my experience with COVID. I think COVID gave me that that time in life which I desperately needed for myself. Like, you know, to sit back, relax, analyze things, understand things, give time to yourself. So it wasn't a bad experience for me, even the lockdown. But yes, for the entire world, people lost their very dear ones. It was a very stressful situation. But I feel it was a time where you have to realize things. Some things were going wrong in life. बहुत चीज़ें, लेकिन हमने बहुत सारी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटीज बना दिया था अपने लाइफ में. हमें ऐसे था कि नहीं, माई वर्क इज इम्पोर्टेंट, फैमिली को टाइम नहीं देना, ये वो पैसा, इसके पीछे भागो वैसा. बट 2 साल आप बिना काम घर पे बैठे रहे अपने फैमिली के साथ. आप पैसे भी नहीं कमा रहे थे, या जहाँ से भी जो भी आ रहे थे, यू pulled, you struggled, but you were with your family, you were together. So I think somehow, again coming back to the universe, it was telling you ki, like, you know, what actually is important in your life, what you should focus on cheezon ke liye. Because today's generation is much more about detachment, running around here and there, mera ye independency. But in that time everyone was dependent on someone else, right? अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए था तो आप किसी एनजीओ पे या किसी और पे या सोनू सूद पे देख लो, आप किसी पे तो डिपेंडेंट थे ना. तो आप कौन से इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हो? एंड इवन आई थिंक सोनू सूद वाज डिपेंडेंट ऑन समवन टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स. सो इट इज अबाउट को एग्जिस्टेंस. सो आई थिंक दैट टाइम वाज फॉर रियलाइजेशन ऑफ थिंग्स. Yeah, we got time with our own self. Yeah, right. So nice. So what do you want people to remember you as forever? Someone who gets a smile on your face. Like, you know, it's always like, you know, who would always want to meet me, sit, talk, and I make them feel good. They enjoy my company. Okay. So if you wake up one day with a superpower, what will it be and how will you use it? I think magic pencil. और क्या चाहिए? Thank you, Kinshuk. Thank it you was so much. wonderful. Thank you. I want you to sign this. Yeah, sure. Okay, I'll just